Assalamualaikum students, welcome back to your physics learning journey. Today we are going to discuss unit 14 optics from class 10th syllabus. Okay, and here we will solve the exercise MCQs and constructed response questions. We will not only find the correct answers but also understand the logic behind each one so you are fully prepared for your exam. Let's clear all your concepts of light, lenses, mirrors, and their amazing applications one by one. MCQ number 1 is a glass slab is dipped in a transparent liquid having same refractive index as that of glass slab. We cannot see the boundary of two media, glass and liquid, due to blank refraction. हमने एक गिलास के स्लैब को डिप किया ट्रांसपेरेंट लिक्विड में जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, ठीक है. हमें वो एज, वो बाउंड्री नहीं नजर आ रही दोनों मीडियम की, ग्लास स्लैब की और लिक्विड की. क्यों? ड्यू टू zero refraction. Because when the liquid and glass have the same refractive index, light does not bend at all when passing from one to another. जब refractive index same हो तो light bend नहीं होती while passing from one medium to another. Since there is no bending, the boundary becomes invisible to our eyes. It is like both are the same medium. बोथ मीडियम सेम नजर आते हैं, उनमें बेंडिंग होती नहीं है, इस वजह से जीरो रिफ्रैक्शन होती है. क्वेश्चन नंबर 2. एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद अ प्लेन मिरर. ठीक है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज, हमारे पास एंड इंसिडेंट रे का एंगल क्या है? 45. हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है. द क्वेश्चन सेज मेक्स एन एंगल ऑफ 45 विद मिरर. That's what the surface, not the normal. It is equal to 90 minus normal जो एंगल होता है वो 90 है. 90 minus this 95 is equal to 45 degree. Law of refraction states that angle of incidence is always equal to angle of reflection. So it is also 45. Both angles are equal as per law of reflection. Two plane mirrors are arranged parallel facing each other. The image formed may be, दो plane mirrors हैं उनको arrange किया गया parallel to each other and they are facing each other. जो image बनेगा how will it be? It will be infinite. Why? Two plane mirrors facing each other reflect the image back and forth repeatedly. वो क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं एक दूसरे का इमेज फोर्थ एंड बैक, फॉर्मिंग इमेजेस इनसाइड इमेजेस. वो क्या इमेजेस के अंदर इमेजेस बनाते जाएंगे. सो थ्योरेटिकली इनफाइनाइट इमेजेस इफ मिरर्स आर परफेक्टली अलाइन. अगर मिरर्स, दोनों मिरर्स को पैरेलल एक दूसरे की तरफ फेस किया हुआ परफेक्टली अलाइन किया जाए तो मिरर्स एक दूसरे के इमेज बनाते जाएंगे, ठीक है, बैक एंड फोर्थ. और इससे क्या होगा कि एक इमेज के अंदर दूसरा इमेज बनता जाएगा, इस वजह से इनफाइनाइट इमेजेस बनते जाएंगे. Question number 4. The apparent flattening of the sun at dawn and dusk is due to the phenomena. जो सुबह या शाम के टाइम जो सन फ्लैटन हमें नजर आता है, what is this phenomena? This is the refraction. Near sunrise or sunset, sunlight passes through a thicker layer of atmosphere. जब वो नीचे एटमोसफेयर की लोअर लेयर पे होते हैं ड्यूरिंग मॉर्निंग और इवनिंग, सनराइज या सनसेट के टाइम पे वो क्रॉस कर रहे होते, पास कर रहे होते, थिक लेयर ऑफ एटमोसफेयर. द एयर डेंसिटी चेंजेस विद हाइट, सो लाइट बेंड्स मेकिंग द सन लुक फ्लैटेंड. वहां पे क्या होता है? लाइट रिफ्रैक्ट हो रही होती है, रिफ्रैक्ट हो रही होती है, बेंड हो रही होती है. सो द फिनोमेना इज रिफ्रैक्शन. क्वेश्चन नंबर 5 इज, on summer days you see the reflections on roads which is called mirage. It is due to, हमें summer days में धूप में अपने रिफ्लेक्शन नजर आते हैं रोड पर. Why? Because of the total internal reflection. A mirage happens on hot days when the air near the ground is hotter and less dense. Light bends gradually towards cooler air above and at a certain angle it reflects completely, creating an illusion of water on the road. Total internal reflection होती है, ठीक है, रिफ्लेक्ट करती है लाइट near the surface.
क्वेश्चन नंबर 6, the colors in the rainbow are formed by, जो रेनबो में डिफरेंट 7 कलर्स हमें नजर आते हैं, कैसे बनते हैं? ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ डिस्पर्शन. When light contains many colors, white light contains many colors, it passes through raindrops. Each color bends differently. हर एक कलर क्या करता है? differently bend होता है. This separation into a spectrum of color is called dispersion. वो जो हर कलर डिफरेंटली बेंड होता है तो डिस्पर्स हो जाता है. विच फॉर्म अ रेनबो, वो क्या करता है? हमें डिफरेंट कलर को अलग अलग दिखाता है. डिस्पर्शन का फिनोमेना. क्वेश्चन नंबर 7 इज द lenses in your eyes produce image on retina. जो हम लेंस लगाते हैं आईज में वो इमेज बनाते हैं रेटिना के ऊपर. किस प्रिंसिपल से? इन्वर्टेड एंड रियल. वो जो इमेज बनता है रेटिना के ऊपर वो इन्वर्टेड होता है, रियल होता है. व्हाई? The lens in your eyes focuses light on the retina, onto the retina. वो रेटिना के ऊपर फोकस क्या करता है? लाइट को. This image formed there is real light actually meets the retina. ठीक है, वो क्योंकि उसको फोकस करवा रहा होता है लेंस रेटिना की तरफ लाइट को, तो वो डायरेक्टली डायरेक्टली टच करती है रेटिना के साथ. एंड इन्वर्टेड अपसाइड डाउन, योर ब्रेन फ्लिप्स इट इन द राइट वे. वो जो इमेज होगा वो अपसाइड इन्वर्टेड होगा, अपसाइड डाउन होगा, लेकिन हमारा ब्रेन उसको हमें फ्लिप करके राइट वे में शो करेगा. सो द करेक्ट आंसर इज इन्वर्टेड एंड रियल. क्वेश्चन नंबर 8, what is the speed of light in diamond if refractive index is 2.5? डायमंड में से स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5 है. स्पीड ऑफ मीडियम जो है, किसी भी मीडियम का हम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? v इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय n. यहाँ पे हमारे पास n गिवन है 2.57 और हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट मौजूद है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड. तो हम क्या करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई हम करेंगे 2.57. सो वी विल गेट द करेक्ट आंसर विच विल बी 1.17 × 10⁻2, विच इज ऑफ कोर्स हम अगर उसको 1.17 को राउंड ऑफ करेंगे तो विच इज क्लोजर टू 1.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. अगेन फार्मूला कौन सा लगेगा? स्पीड इन मीडियम इज इक्वल टू speed of light divided by refractive index of that medium. 3 × 10⁸ divided by हमने 2.5 किया था. Okay, question number 9. In a convex mirror, when the object is placed at C, in the image formed will be अगर in speed of light. ठीक है, कन्वेक्स मिरर में अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए लाइट के सामने तो कौन सा इमेज बनेगा? A convex mirror always gives a virtual, upright and smaller image of the object, no matter where you put the object. तो ये smaller बनाएगा image. ठीक है, हम कहाँ भी रखें उसको. The working principle of optics fibers is, जो optical fibers के जो principle है वो कौन सा होगा? Total internal reflection. Optical fibers trap light inside their core because the light hits the boundary at an angle greater than the critical angle, causing it to totally internally reflect inside of escaping. Question number 11 is, if an object is placed at a 10 cm from the convex lens having focal length 5 cm, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है? 10 सेंटीमीटर और उसकी फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या है? 5 सेंटीमीटर. द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस, हमने लीनियर मैग्निफिकेशन फाइंड करनी है. लेंस फार्मूला हमारे पास क्या है? 1 डिवाइडेड बाय एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय वी माइनस 1 डिवाइडेड बाय यू. यहाँ पे हमारे पास फोकल लेंथ प्लस 5 सेंटीमीटर मौजूद है, यू हमारे पास माइनस 10 सेंटीमीटर है और वी क्या है? प्लस 10 सेंटीमीटर. ठीक है, मैग्निफिकेशन के लिए हम क्या इन वैल्यूज को पुट करेंगे? v डिवाइडेड बाय u, तो 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाय माइनस 10 विल बी इक्वल टू 1, सेम साइज 1. नॉन luminous मैटर विच कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल लेंसिंग इज कॉल्ड. नॉन luminous मैटर जो होता है उसको अगर हम ग्रेविटेशनल लेंस की मदद से देखें तो हमें क्या नजर आता है? we can see the dark matter. why? Dark matter does not emit or reflect light, so we can't see it directly.
but its gravitational pull can bend light from distant galaxies, revealing its presence. So we will see dark matter. Image formed by plane mirror is always, प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है वो हमेशा क्या होता है, virtual and erected होता है. Plane mirror always makes an image which is virtual, cannot be projected on screen, ठीक है, but upright and in the same size as the object. Erect होता है वो upright होता है और object का same size होता है. Einstein's rings are seen due to the phenomena. आइंस्टाइन रिंग्स किस फिनोमेना की वजह से नजर आते हैं, ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से. एंड आइंस्टाइन रिंग्स फॉर्म्ड व्हेन लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज बेंट परफेक्टली अराउंड अ मैसिव ऑब्जेक्ट बिटवीन इट एंड अस. दिस बेंडिंग इज नोन एज gravitational lensing. Okay, question number 15. The black phenomena is used in non-destructive testing of materials for voids and cracks in opaque material. ठीक है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्सटिंग ऑफ मटेरियल्स करें फॉर voids एंड क्रैक्स इन ओपेक मटेरियल, तो हम कौन से फिनोमेना के प्रिंसिपल्स को पढ़ते हैं. द करेक्ट आंसर इज acoustic lenses, because for checking hidden cracks in solid objects we use ultrasound waves. Their bending helps to detect the flaw without cutting open the material. This is the acoustic lensing phenomena. Okay, question number 16 is, all waves exhibit the phenomenon of reflection, but light waves are the only waves which exhibit the phenomena. बाकी जो सारी waves हैं वो क्या करती हैं, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना शो करती है, बट लाइट वेव्स किसका फिनोमेना शो करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का. Why all waves reflect, but total internal reflection is special property of light in optics used in devices like optical fibers and prisms, etc. Okay, question number 18 is, the white light passed through a prism due to refraction shows the behavior of. जब लाइट पास करते, व्हाइट लाइट पास करते प्रिज्म में, तो रिफ्लेक्शन की वजह से क्या बिहेवियर शो करती है, इट इज dispersion. A prism splits white light into colors because each wavelength bends differently. This color separation is dispersion. Okay, I have missed the question number 17. The working principle of optical fiber is total internal reflection. ठीक है. Question number 19. The visible light spectrum lies in the range of, जो visible light spectrum होता है वो किस range में lie करता है, visible light falls in the wavelength range 400 nanometer to 700 nanometer. Below 400 nanometer is ultraviolet, above 750 nanometer is infrared. ठीक है. Okay, question number 20. The rods and cones a human eye are, कितने rods होते हैं ह्यूमन आई में और कितने cones होते हैं. The retina has about 100 million rods and 6 million cones. So option B is correct. The difference explains why we can see better in dark without colors. Okay. Now question number 2 of the exercise is constructive response. The question is, take some water in the bowl and put a small mirror in it such that some part of the mirror is dipped in the water. Fall sunlight on the mirror in such a way that reflection of mirror appears on the wall or whiteboard of the class. बेसिकली हमने एक वाटर बॉल रखना है, उसके अंदर स्मॉल मिरर को इस एंगल से रखना है कि हाफ जो मिरर है वो उसके अंदर डिप होना चाहिए और उसके ऊपर सनलाइट को फॉल करवाएं ऐसे कि रिफ्लेक्शन हमें सामने वॉल या वाइट बोर्ड पर नजर आए. Now the questions are, why the 7 color pattern is shown on the wall. 7 color pattern wall पे क्यों नजर आता है. The seven color pattern appears because the sunlight, which is made of different wavelength colors, gets split into its constituent colors when it passes through the water and reflects from the mirror. This separation of color is called the dispersion. Okay, what is the role of water in this phenomena? Water changes the speed of light differently for different wavelengths. As sunlight enters and leaves the water at an angle, the different colors bend by different amounts before being reflected by the mirror. This helps spread the color apart so they can be seen separately on the wall. So the last question of this section is, discuss the basic principle used here which converts the white sunlight into 7 colors. The basic principle, as we have discussed in question number 1, is dispersion of light.
When white light passes from one medium into another, from air to water, each wavelength is refracted by a different amount due to the change in the speed. Violet light bends the most and red light bends the least, resulting in the spectrum of 7 colors. Okay student, that's all for today. We have now completed the MCQs and constructive response question of Unit 14 Optics. I hope the explanation make your concepts crystal clear. Keep revising, keep practicing, and you will see your confidence grow with every topic. Don't forget to check out the other units we have covered. And inshallah, we will continue learning together. If you like these specific videos, then like, comment, share, and subscribe this channel. Allah Hafiz and happy study.